questions and some factor terms in drug discovery process and drug likeness. uh, drug likeness proper drug likeness and drug properties में के अंतर्गत आते हैं ये. First is what is drug likeness. Drug likeness is a qualitative concept used in drug design how how drug substance is with respect to a factor like bioavailability. It is estimated from molecular structure before the substance is given, synthesized and tested. It is जो ये drug likeness होता है estimated होता है from the molecular structure before it substance is synthesized. And second is what is solubility. Solubility, the aqueous solubility of solubility is important in drug for the drug properties, because thus aqueous solubility of compound a significant affect it absorption and distribution characteristic. जो aqueous solubility होता है compounds का वो significantly affect करता है, significantly affect the its absorption and distribution को characteristic को affect करता है. And low molecule and low solubility goes along with the bad absorption. If solubility low होगा तो वो low होगा तो solubility if solubility low होगा तो वो bad absorption show करेगा. The general aim to avoid low absorption poor soluble compound. The general aim is to avoid low poor soluble compounds. सॉलिबिलिटी फैक्टर के द्वारा पता होगा तो हम पुअर सॉल्युबल कंपाउंड होंगे उनको हम अवॉइड कर सकते हैं. कैलकुलेशन लॉग एस कैलकुलेशन किया जाता है इसमें सॉलिबिलिटी में. एंड आवर एस्टिमेटेड लॉग एस वैल्यू इज लॉग जो एस्टिमेटेड लॉग वैल्यू इज अ यूनिट स्ट्रेपेड is a unit striped logarithm base 10 of the solubility measurement in mole in mole per liter. तो solubility measured होता है logarithm के base 10 पे of step unit जो concentration जो log इसके through. More than 80% of the drug on the market have a estimated log s value more than -4. जो मार्केट में जो मोर देन 80% ड्रग है उनके एस्टिमेटेड जो लॉग एस वैल्यू है फॉर द सॉल्युबिलिटी इट्स ग्रेटर देन -4. एंड थर्ड वन इज सॉल्युबिलिटी फैक्टर. सॉल्युबिलिटी फैक्टर इंक्रीज बाय एडिंग एयोनाइजेबल ग्रुप. तो ये जो सॉल्युबिलिटी होता है वो इंक्रीज होता है बाय द by ionized group increase by adding ionizable group or reducing log p and molecular weight. reducing log p value and molecular weight के थ्रू भी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं solubility में. and the compound structure also important for the solubility and solubility and the solubility is affected by physiochemical properties which can be estimated using vitro assays or the software calculation. जो solubility is affected by the physiochemical properties होता है compounds का वो भी affect करता है solubility को और which can be calculated from the in vitro assays or the software calculation. Lipophilicity also affect the solubility because they're determined by the determined by its lipophilicity also affect our solubility of drug. It's determined by van der Waals dipolar hydrogen bonds ionic interaction. And the molecular weight and shape भी affect करते हैं solubility को. and pK pharmacokinetics parameters जो डिटरमाइन बाय द फंक्शनल ग्रुप आयोनाइजेशन. पीके वैल्यू भी अफेक्ट करता है. क्रिस्टलैटिक एनर्जी फैक्टर जो अफेक्ट करता है सोलिबिलिटी को. डिटरमाइन बाय द क्रिस्टल स्टैकिंग मेल्टिंग पॉइंट.
hydrogen hydrophilicity. And what is hydrophilicity in C log calculation? जो hydrophilicity, the log p value of compound, which is logarithm of its partition coefficient between the water and octanol logs. जो पार्टीशन कॉफी लॉगरिथम होता है पार्टीशन कॉफिशिएंट पी का पी वैल्यू लॉग जो ये जो है concentration of होता है concentration of octanol but upon concentration of water. Okay, होता है is a well established measured of the compound hydrophilicity. It is a well established measured of compound low hydrophilicity and there which log if a compound have low its compound have low hydrophilicity, then therefore which log p value cause poor, क्योंकि log p value cause poor and absorption and cause poor absorption and permeation and poor absorption को encourage करेगा if hydrophilicity and low hydrophilicity nature. And compound have reasonable, it has been shown compound have reasonable probability of being well absorbed. Their log p value must not be greater 0.50 मतलब 5 से जो इसका log p वैल्यू होगा वो 5 से ग्रेटर नहीं होगा तो reasonable पर probability of being well absorbed. The distribution of calculated log p value of more than 3000 drugs on the market under this fact जो ये इस फैक्ट उनका जो क्लॉक पी वैल्यू है मोर देन 3000 ड्रग्स जो मार्केट में हैं उनमें से उनका उनका जो लॉक पी वैल्यू होता है जनरली ग्रेटर देन 5 होता है. And the last one is molecular weight. Molecular weight is also important parameter for drug likeness properties and the optimizing compound for high activity on a biological target almost often goes along with the increased molecular weight. जो optimizing compound for high activity on the biological target almost go along with the increased molecular weight. जो ये एक्टिवेशन होगा मॉलिकुलर कंपाउंड का वो मॉलिकुलर वेट की इंक्रीज इनके साथ भी इंक्रीज मॉलिकुलर वेट पर डिपेंड करेगा. हाउएवर मोर कंपाउंड्स विथ हायर वेट आर लेस लाइकली टू ऑब्जर्वेड एंड देयरफॉर टू एवर एवर रीच द प्लेस ऑफ एक्शन. अगर मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होगा कंपाउंड का तो ये अब इजली ऑब्जर्व नहीं होगा एंड द अवर टारगेट साइड तक भी इजली पहुँच नहीं पाएगा एक्शन साइड. Thus the trying तो so इसलिए ट्राई करते हैं molecular weight of as a low as possible should be the desire of every drug factor drug for जो ड्रग्स का कंपाउंड्स के लिए हम ट्राई करते हैं कि उसको molecular weight as low as possible मतलब लो रहे. More than 80% of all traded drug have molecular weight below 450 के नीचे होता है ऑलमोस्ट सारे ड्रग्स जो मार्केट में है. दिस इज ऑल अबाउट ड्रग डिस्कवरी एंड